our environment. Which of the following chemicals is not responsible for ozone depletion? ओजोन डिप्लीशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रसायन रिस्पॉन्सिबल नहीं है? ए CFC, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी हैलोन्स, डी DDT. Two. Which of the following is a decomposer? निम्नलिखित में से क्या ये एक डिकम्पोजर है? ए मशरूम, बी स्पाइरोगैरा, सी यर्थवॉर्म, डी अमीबा. Which of the following chemical pollutant is responsible for the decline of bird population? निम्नलिखित में से कौन सा केमिकल पोल्यूटेंट बर्ड पॉपुलेशन की गिरावट के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ए नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, बी DDT, सी मीथेन, डी CO2. Which of the following is the best way to dispose plastic waste? प्लास्टिक कचरे की डिस्पोजल के लिए सबसे अच्छी विधि निम्न में से कौन सी है? ए burning them into ashes, B recycling them to make new plastic items, C burying them in the soil, D throwing them into the drains. Which of the following is a non-biodegradable material? निम्नलिखित में से कौन सा एक non-biodegradable material है? A. Animal bones, B. Leather, C. Silver foil, D. Wool. In a food chain, if 15,000 joules of energy is available to the producer, how much energy will be available to the tertiary consumers? एक फूड चेन में यदि 15,000 joules एनर्जी उत्पादक को उपलब्ध हो तो tertiary consumers को कितनी एनर्जी उपलब्ध होगी? A 7,500 joules, B 1,500 joules, C 150 joules, D 15 joules. Which of the following problem is caused by non-biodegradable chemical pollutants? निम्न में से कौन सी समस्या non-biodegradable कचरे के कारण होती है? A. Contamination, B. Deforestation, C. Fermentation, D. Biomagnification. Which of the following things is not caused by the UV radiation? निम्नलिखित में से कौन सी चीज
यूवी लाइट रेस के कारण नहीं होती है? ए. फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, बी. डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन, सी. स्किन कैंसर इन ह्यूमंस, डी. इम्यूनिटी डैमेज इन ह्यूमंस. Which of the following is the reason for deforestation? निम्नलिखित में से कौन डिफॉरेस्टेशन का कारण है? ए. इंडस्ट्रियलाइजेशन, बी. अर्बनाइजेशन, सी. फॉरेस्ट फायर्स, डी. ऑल दी अबव. Which of the following organisms has highest concentration of non-biodegradable chemicals in their bodies? निम्न में से किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स का हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन होती है? ए. इंसेक्ट, बी. फ्रॉग, सी. स्नेक, डी. हॉक. If you like the video, please give us a like and don't forget to share this with your friends.